गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू इंडिया। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इंडिया में विजिट किया है। तो ये जो है एक एनुअल समिट होगी, पहली एनुअल समिट है रादर बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एट द लेवल ऑफ लीडर्स। तो ये जो है अब से हर साल जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक साल जाया करेंगे ऑस्ट्रेलिया, और जो है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट ईयर जो है वो इंडिया में आया करेंगे। एक तरह से एनुअल समिट हो जाया करेगी अब से। तो इस साल की अगर हम विज़िट देखें तो उसमें जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों प्राइम मिनिस्टर्स गए। फिर ह्यूज डेलीगेशन ऑफ बिजनेस लीडर्स आया हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो हैं बिजनेसेस जो हैं वो मोस्टली चाइना पर डिपेंडेंट हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो चाइना से अपनी इकोनॉमी को जो है वो थोड़ा डीलिंक करें। और जो है फर्स्ट फॉरेन लीडर बने ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, जो कि INS विक्रांत पर जिन्होंने जो है वो विज़िट किया। और दोनों कंट्रीज़ ने डिस्कस किया कि कैसे जल्दी से जल्दी जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और कोऑपरेशन एग्रीमेंट को जो है वो फाइनलाइज़ किया जा सकता है, क्योंकि अभी तो हम इंटरिम ट्रेड डील में जो है वो से काम चला रहे हैं। ठीक है, लगभग इस जो है अगर ECTA जो है इन्फोर्स हो जाएगा प्रॉपरली, तो 85% जो है ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया जो है वो टैरिफ फ्री हो जाएंगे। दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो उन्होंने जनरल रावत ऑस्ट्रेलिया इंडिया यंग डिफेंस ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलाया है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इनवाइट किया कि वो तालिस्मान साबर एक्सरसाइजेज में जो है वो इस साल जो है पार्टिसिपेट करे अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो है आपके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जो है रिलीज़ किया है, जिसमें कि ये दिखाया गया है कि कौन से एरियाज़ इंडिया में लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। उत्तराखंड, केरला, जम्मू कश्मीर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड जो है वो रिपोर्ट की गई हैं 1998 से 2022 के पीरियड में। मिज़ोरम सबसे हाईएस्ट जो है वो वहाँ पर लैंडस्लाइड्स रिपोर्ट की गई हैं। मणिपुर में भी बहुत ज़्यादा जो है वो रिपोर्ट की गई हैं। और उत्तराखंड और केरला में जो है ये सिचुएशन जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, आपको पता ही होगा जोशीमठ में भी अभी रिसेंटली क्या हुआ था। ऐसे ही केरला में जब फ्लड्स आए थे तब भी जो है मैसिव लैंडस्लाइड्स आए थे 2018 में। मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखें तो जो है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड का, उसको 147 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट में सबसे जो है वो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट माना गया है। लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं? मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, डेब्री और अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। नेचुरल कॉजेज से भी हो सकता है, हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक वगैरह से। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ मतलब ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो सकता है। और रेनफॉल की वजह से जो है सबसे कॉमन ये लैंडस्लाइड्स होती हैं। इंडिया कितना प्रोन है? इंडिया जो है टॉप 5 लैंडस्लाइड प्रोन कंट्रीज़ में आता है। रेनफॉल की वजह से जो है सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड इंडिया में होते हैं। और अगर हम देखें तो स्नो कवर्ड एरियाज़ को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो 12.6% ऑफ कंट्री का जो जोग्राफिकल एरिया है वो लैंडस्लाइड को प्रोन है। अब ये लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने इसको बनाया है, और इसरो ने ऑफ कोर्स का ये सेंटर है। पैन इंडिया डेटाबेस बनाया गया है 80,000 लैंडस्लाइड्स का, जो कि पिछले 2 दशकों में हुई है यूजिंग सैटेलाइट डेटा। और ये डेटा जो है डेटाबेस बहुत आपका सीजनल लैंडस्लाइड्स और इवेंट बेस्ड लैंडस्लाइड्स को कवर कर रहा है। रिच कलेक्शन ऑफ लैंडस्लाइड इन्वेंट्री ये डेटा देता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सऊदी ईरान टाइज इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों को चाइना ने होस्ट किया, और दोनों ने अब जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो अपने रीएस्टैब्लिश कर लिए हैं। और जो है एक दूसरे की कंट्री में एम्बेसीज ओपन करने के लिए आफ्टर 7 ईयर्स जो है वो एग्री हो गए हैं। अब सऊदी अरेबिया और ईरान बिटर राइवल्स क्यों हैं? ऑफ कोर्स रीजनल डोमिनेंस का इशू है। दोनों जो है वो रीजनल डोमिनेंस चाहते हैं। सऊदी अरेबिया खुद को मुस्लिम वर्ल्ड में का लीडर मानता है, लेकिन 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ ईरान में, तो वहाँ पर एक ऐसी रेवोल्यूशनरी थियोक्रेसी आ गई जो कि वो अपने इस मॉडल को, रेवोल्यूशनरी मॉडल को, बाकी सारी कंट्रीज़ ऑफ मिडल ईस्ट में भी इम्प्लीमेंट करना चाहती थी। और रिलीजियस डिफरेंसेस भी हैं। ईरान जो है वो लार्जली शिया कंट्री है, सऊदी अरेबिया सुन्नी कंट्री है। और उसके बाद जो हैं वो लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहे, अरब स्प्रिंग, सीरियन वॉर, यमन वॉर, मक्का स्टैम्पेड, ये सारे यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। अब इस एग्रीमेंट के अंदर दोनों की कंट्रीज़ के टॉप डिप्लोमेट आपस में बात करेंगे।
रिस्टोरेशन ऑफ टाइज करेंगे, दोनों कंट्रीज़ अपनी एम्बेसीज को ओपन करेंगे एक दूसरे की कंट्री में। 2001 का एक सिक्योरिटी कॉपरेशन एग्रीमेंट और 1998 का जनरल इकोनॉमी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी जो है वो एक्टिवेट किया जाएगा। दोनों ने एग्री किया कि वो एक दूसरे की सवरेनिटी को जो है वो रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में नॉन इंटरफेरेंस रखेंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस इतनी इतनी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि दोनों आपस में प्रॉक्सी वॉर्स खेल रहे थे तब से इस पूरे रीजन में, यमन में, सीरिया में, पूरे मिडिल ईस्ट में रादर। और इस में ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाइना ने इन टॉक्स को होल्ड किया है, तो एक तरह से यूएस को मैसेजिंग है कि यूएस जो है वो अब मिडिल ईस्ट में सोल पावर नहीं रह गया है। यूएस को सऊदी अरेबिया ने भी मैसेज दिया कि आप हमको जो है वो फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो, हम जो है हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि इंडिया जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता था कि इस राइवलरी के बीच में जो है मिडिल ईस्ट में रिलेशंस को जो है वो मेंटेन करना। तो अगर ये दोनों के अगर टाइज नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं H3N2 वायरस। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने 2 डेथ्स रिपोर्ट की हैं कर्नाटका और हरियाणा में ड्यू टू दिस H3N2 वायरस। अब ये H3N2 वायरस है क्या? टाइप ऑफ अ फ्लू है ये, और ये इन्फ्लुएंज़ा A B C D जो है आपके होते हैं, उनमें से जो इन्फ्लुएंज़ा वायरसेस की वजह से ये H3N2 वायरस होता है। इन्फ्लुएंज़ा A भी फर्दर क्लासीफाइड किया जाता है और उसमें से ही एक जो है H3N2 वायरस माना गया है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि इन्फ्लुएंज़ा ए का एक सब टाइप है जो कि 1968 के फ्लू पैंडमिक में, जिसमें 1 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी, उस टाइम पर ये जो है फ्लू चला था। इसके स्ट्रेन्स जो हैं वो बहुत ही ड्रामेटिकली इवॉल्व हुए हैं और इसके सिम्टम्स अगर हम देखें तो एक लाइक एनी अदर फ्लू है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं या इन्फेक्शन होती है जनरली 5 से 7 दिन तक रहती है। बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज के चिल्ड्रन और 50 अबव एज के जो हैं लोग, उनको जनरली ये टारगेट करता है। सेल्फ हाइजीन सबसे बेस्ट वे है इसको रोकने का। और सेल्टामिविर WHO ने रिकमेंड किया है कि जो H1N1 के फ्लू में जो है मेडिसिन यूज़ की जाती है, उसको H3N2 केसेस को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ड्रग जो है अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। तो रियल टाइम सर्वेलेंस जो है हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है थ्रू NCDC, ताकि देखा जा सके कि इन्फ्लुएंज़ा लाइक जो ये इन्फेक्शंस हैं ये कितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ में रिपोर्ट हो रही हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडिया और बांग्लादेश जो है वो जॉइंटली इनॉग्रेट करने वाले हैं क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन बिटवीन 2 कंट्रीज़। ये पाइपलाइन असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी से डीजल को कैरी करते हुए बांग्लादेश में पर्वतीपुर डिपो तक लेकर जाएगी। 130 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है, जिसमें 126 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश में होगा, 5 किलोमीटर्स की पाइपलाइन इंडिया में होगी। इंडियन गवर्नमेंट की ग्रांट की वजह से जो है ये पाइपलाइन बनी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने एक सिंथेटिक सर्वे किया है यूनिवर्स का, और उससे हमें ये पता लगता है कि नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप जो है वो क्या हमें ऑब्जर्वेशंस देने वाला है। ये टेलीस्कोप जो है नासा का डीप स्पेस इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है, और ये हमको आंसर करेगा एस्ट्रोफिज़िक्स के क्वेश्चन जैसे कि डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, एक्सोप्लैनेट, इंफ्रारेड एस्ट्रोफिज़िक्स। और इसको 2026 और 2027 के टाइम पर लॉन्च किया जाने वाला है। ठीक है, इसके अगर हम देखें फीचर्स तो ये हमको एक ऐसा फील्ड व्यू देगा जो कि 100 टाइम्स ग्रेटर है हबल इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट से, और ये इंफ्रारेड इमेजेस जो होंगी ये 200 टाइम्स लार्जर देन हबल स्पेस टेलीस्कोप होने वाली है। हबल स्पेस टेलीस्कोप आपको पता ही है 1990 में नासा ने इसको लॉन्च किया था। लार्ज स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है ये। अल्ट्रा वायलेट से लेके विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो सब में जो है, और इवन नियर इंफ्रारेड जो है स्पेक्ट्रम में भी जो है इमेजेस को कैप्चर करता है। लार्जर दैन अ स्कूल बस इन साइज है, और ये मोस्ट डिस्टेंट स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डिफेंस फोर्सेस ने ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करने का जो है वो एकदम एक रोक दिया है जब तक मुंबई कोस्ट पर जो हुआ जो है हादसा विद रिस्पेक्ट टू दिस हेलीकॉप्टर ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाता है। तो ये एक मल्टी रोल मल्टी मिशन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। 5.5 टन इसका वेट है।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। तीनों डिफेंस फोर्सेस हमारे इंडिया की इसको यूज़ करती हैं। इंडिया रादर इसको एक्सपोर्ट भी करता है बोलीविया, म्यांमार, इजराइल, मालदीव्स और नेपाल को। और इसका जो आर्म्ड वेरिएंट ऑफ अटैक है जो है MK4 वर्जन है। और इसके अगर हम देखें तो इसको हम ALH रुद्र भी कहते हैं। ट्विन इंजन इसकी कन्फिगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो है वो इसके अंदर जो है वो लगाया भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोपेलिन ग्लाइकॉल, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ड्रग मैन्युफैक्चरर्स को कहा है कि जो प्रोपेलिन ग्लाइकोल दिल्ली बेस्ड मैरियन बायोटेक ने जो बनाती है उसको नहीं आप सोर्स करो, बिकॉज उससे जो है उज़्बेकिस्तान में 19 चिल्ड्रन की डेथ हो गई थी। तो प्रोपेलिन ग्लाइकोल एक सिंथेटिक फूड एडिटिव है जो कि अल्कोहल के ही केमिकल ग्रुप को बिलोंग करता है। ये एक सिंथेटिक लिक्विड सब्सटेंस है जो कि वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है, क्लियर है, कलरलेस है, स्लाइटली सिरपी होता है और ये वेपर फॉर्म में रहता है इन द एयर, ओडरलेस है और टेस्टलेस होता है। इसको जनरली पॉलिस्टर कंपाउंड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल, फूड, फार्मा इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है एज एन एंटी फ्रीज। और ये बिकॉज बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसको मॉइस्चर कंडीशंस जो आपके कई मेडिसिन में मेंटेन करनी पड़ती हैं या कॉस्मेटिक्स या फूड प्रोडक्ट्स में, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सॉल्वेंट भी होता है फूड कलर्स और फ्लेवर्स में, और पेंट और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉफ़ी प्रोडक्शन, इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली रिसर्चर्स कह रहे हैं कि कॉफ़ी प्रोडक्शन जो है अक्रॉस द वर्ल्ड वो थ्रेटन होने वाली है बिकॉज ऑफ सिंक्रोनस क्रॉप फेलियर्स। अब वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड की कॉफ़ी जो है वो अरेबिका, रोबस्टा कॉफ़ी होती है, और ये एक सेंसिटिव क्रॉप होती है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है इसको अपनी ग्रोथ के लिए। 15 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर्स की रेनफॉल चाहिए होती है इसको। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए होती है, ड्राई वेदर चाहिए होता है, और ये जनरली हिल स्लोप्स पर उगाई जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विन्स अवार्ड्स 2023 गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने विमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड 2023 अनाउंस किए हैं, जो कि दिए जाएंगे उनको जो कि अर्बन सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट में विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल विमेन काम कर रही हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, माइक्रो एंटरप्राइजेस को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, स्टार्टअप्स को, इंडिविजुअल विमेन लीडर्स, स्वच्छता कैंपेन्स को जो है वो के लिए ओपन होगा, और स्टेट लेवल पर ये इवैल्यूएशन की जाएगी। ठीक है, जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं उनको जो है इसमें नॉमिनेट किया जा सकता है और उसके बेसिस पर ये नाम चुने जाएंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नासाम्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे ने रिसेंटली यूक्रेन को 2 नासाम्स जो है फायरिंग यूनिट्स देने का जो है वो प्लान किया है। मीडियम रेंज ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर टारगेट जो है वो लो और मीडियम ऑल्टीट्यूड पर जो है ये जो है एंगेज कर सकता है इन ऑल वेदर कंडीशंस। इसको नॉर्वे, US, कनाडा, चिले, फिनलैंड, इंडोनेशिया, नीदरलैंड्स, ओमान, कतर, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और यूक्रेन जैसी कंट्रीज़ यूज़ करती हैं। इवन US का जो नेशनल कैपिटल रीजन है, मतलब वॉशिंगटन मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है, वहाँ पर ये एयर डिफेंस सिस्टम 2005 से ऑलरेडी लगाया हुआ है। वर्ल्ड का जो है फर्स्ट नेटवर्क सिस्टम है जिसको आप किसी भी और इक्विपमेंट के साथ या एयर डिफेंस सिस्टम के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं MSME लीन स्कीम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME जो है उन्होंने MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम को लॉन्च किया है। ये बेसिकली क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहती है MSME मैन्युफैक्चरर्स की, ताकि वो अपने आप को वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर्स बना सकें। इसका यूज़ करते हुए इस लीन जर्नी में MSME जो है अपनी वेस्टेजेस को सब्सटैंशली कम कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर पाएंगे, क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग टूल्स जैसे कि 5S, केजन, कैनबैन, ये सब जो हैं उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी लीन कंसल्टेंट्स द्वारा जो आपके MSMEs को या MSME ऑपरेटर्स को। और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है 90% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी कंसल्टेंसी फ़ीस की, और कुछ एक्स्ट्रा जो है 5% जैसे जो है जो MSMEs हैं, स्पेशल MSMEs हैं, उनको जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, इस पूरी स्कीम के तहत।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। ये आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट टॉपिक जो कि हम सिक्योरिटी में कवर करते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है वो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है वो थर्ड सेशन ऑफ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की जो है सेशन में जो है वो अनाउंस किए हैं, अदर फेलिसिटेट किए हैं। ये अवार्ड्स इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को मिलते हैं जो कि इंडिया में हैं और वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में कंट्रीब्यूशन देती हैं। सिर्फ इंडियन नेशनल्स और इंडियन इंस्टीट्यूशंस ही एलिजिबल होते हैं इस अवार्ड के लिए। इंस्टीट्यूशंस, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेट एंटिटीज़, ये सब जो हैं जो कि अगर इंडिया में हैं वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और हर साल 23 जनवरी को ये अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसमें 51 लाख रुपीज़ कैश प्राइज़, एक सर्टिफिकेट मिलता है, और अगर इंडिविजुअल लेवल पर ये अवार्ड दिया जा रहा है तो 5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाता है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Australian Prime Minister's visit to India. This topic is important for your international relations. You know that recently the Prime Minister of Australia paid a state visit to India, and this visit is important because the ties have recently been elevated to the comprehensive strategic partnership level in June 2020. This is the first India-Australia annual summit, and from now on, each year, both leaders will meet in their respective countries alternatively. And PM Modi and PM Albanese recently went to the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad also. A huge delegation of business leaders also arrived with the Australian Prime Minister because now they want to wean their economy away from China, on which they are almost dependent for one third of their total exports. Um, PM Albanese became the first foreign leader to visit INS Vikrant also, where he announced that India is a top security partner for Australia. Both countries recognize the need for finalization of the Comprehensive Economic Cooperation Agreement, and we are currently using the interim deal of it, and we have almost eliminated tariffs on more than 85% of Australian exports to India. Uh, India and Australia also finalized a mechanism for recognizing each other's educational qualifications. Australia also invited India to join the Talisman Sabre exercise, and General Rawat Australia India Young Defence Officers Exchange Program has also been launched, and a 15-member contingent also visited Agra based military establishment under this program. So the next topic is landslide atlas of India. This topic is important for your geography section. ISRO has recently released the landslide atlas of India, which provides a detailed guide of identifying landslide hotspots in the country. So several states in India like Uttarakhand, Kerala, Jammu Kashmir, Mizoram, Tripura, Nagaland, and Arunachal Pradesh have reported the highest number of landslides during the last 25 years, and Mizoram has topped the list. Manipur has showed a similar trend also, but the alarming situation is emerging now from Uttarakhand and Kerala, where you may have heard about the news of Joshimath, and in Kerala we have seen uh, massive floods in 2018, which led to these landslides. If we look at the most vulnerable district, then this Rudraprayag district of Uttarakhand has been reported as the most vulnerable district. Um, uh, Out of the total 147 vulnerable districts. So what let us also see about what are the landslides. So a landslide is defined as a movement of mass of rock, debris, or earth down a slope, and it is because of direct influence of gravity. There are natural causes also, but there are also anthropogenic activities because of which this landslides can occur. But the most common cause is the rainfall induced landslide events. So, how prone is India to landslides? India is considered as among the top 5 landslide prone countries in the world. Rainfall variability pattern is the single biggest cause for landslides. And if we exclude the snow covered areas, approximately 12.6% of the country's geographical land area is prone to landslides. So, what is this landslide atlas of India? It is prepared by the National Remote Sensing Center, and it has created a pan India database of 80,000 landslides. Um, this database contains both the seasonal landslides and the event based landslides also. It also provides a rich collection of landslide inventory.
So the next topic is Saudi-Iran ties. This topic is important for your international relations. So Iran and Saudi Arabia have agreed to re-establish their diplomatic relations and reopen embassies after 7 years of their tensions. So Saudi and Iran both have agreed to resume diplomatic ties. They have been, while they were locked in a terrible battle of dominance. So they have this regional dominance issues where Saudi wants to dominate the Islamic world, but Iran wants a revolution like they had in their own country in 1979 in the this Middle Eastern region. There are also religious differences also. Between these two countries, where Iran is basically Shia ruled or Shia dominated, and Saudi is Sunni dominated countries country. There are series of events which have further exacerbated the tensions between the two countries. And what are the key highlights of this recent agreement? Both countries have agreed that their two top diplomats will meet each other. They will reopen their respective embassies in Tehran and Riyadh. They have also reactivated a 2001 security cooperation between the two countries, and a generalized economy agreement which was signed in 1998 has also been activated. So they also have confirmed that they will respect the sovereignty of states, each other, and they will not interfere in the internal affairs of each other. So why this agreement is significant? Because Iran and Saudi Arabia have been engaged in many proxy wars in this country, in this region rather. So this recent agreement would help them to end the war in Yemen and de-escalate tensions in the Middle Eastern region. Because China has hosted this talk, it has given a message to US that its long held supremacy in this Middle Eastern region has been challenged by the Chinese side now. US has also been given the message by Saudi side that they cannot be taken for granted. And for India, it is a win-win situation, because we had to navigate between the troubled waters of Middle East because of this rivalry between the two countries. Now we will have a much needed space for us to maneuver in this region. So the next topic is H3N2 virus. This topic is important for your social issues. So India has recorded two deaths, one each in Karnataka and Haryana due to influenza A subtype H3N2 virus. So what is this H3N2 virus? It is an influenza virus which causes infectious diseases known as flu, and this influenza virus consists of A, B, C, and D, and this H3N2 is a influenza A subtype. It caused the 1968 flu pandemic, which led to the death of about 1 million people globally. Its strains have dramatically evolved, and it's similar to its symptoms are similar to any other flu, and it generally lasts for 5 to 7 days, and it preys on individuals below the age of 15 years or above the 50 years of age. Self hygiene is the best way to thwart the spread of this virus, and oseltamivir is the drug to treat this, which is used to treat the H1N1 flu, is also being recommended by WHO to be used for the treatment of H3N2 cases. That's why Indian government is providing this drug through the public health system free of cost. And we are also monitoring the disease spread through the real-time surveillance of cases. So the next topic is India-Bangladesh Friendship Pipeline. This topic is important for your international relations. PMs of both India and Bangladesh will jointly inaugurate the maiden cross-border oil pipeline between the two countries, which will carry diesel from Assam-based Numaligarh refinery to Parbatipur depot of Bangladesh. This will be a about 130 kilometer long pipeline, of which 126.5 kilometers pipeline will be in Bangladesh, and it has been built using the grant assistance from the government of India. So the next topic is Nancy Grace Stroman telescope. This topic is important for your science and tech section. Scientists have created a huge synthetic survey of a section of universe, which will show what we can expect from the Nancy Grace Roman Space Telescope's future observations. So what is this Nancy Grace Roman Space Telescope? It is NASA's Deep Space Infrared Observatory, and it will help
us to answer essential astrophysics questions like what is dark energy, dark matter, exoplanets, and infrared astrophysics. It will be launched between 2026 or 2027, and it will have a field view of almost 100 times greater than the Hubble infrared instrument. It will be able to create infrared images which are about 200 times larger than the Hubble Space Telescope. You all know that Hubble Space Telescope was launched in 1990. It's a large space-based observatory of NASA, and its domain extends from ultraviolet to through the visible and to the near infrared spectrum. It is larger than a school bus in size, and it observes the most distant stars, galaxies, and planets. So the next topic is ALH Dhruv helicopters. This topic is important for your security section. Defense forces of India have halted the operations of ALH Dhruv helicopters because of a recent incident that took place off the Mumbai coast recently. So until this investigation gets completed, they have halted the operation of these helicopters. This is a multi-role, multi-mission light utility helicopter, which is about 5.5 ton weight in weight, and it is intended for both military and civil operations. It has been built and by the HAL, and it is being used by all three defense forces of India. Apart from India, it is also being exported to Bolivia, Myanmar, Israel, Maldives, and Nepal. Mk4 version is the armed variant of this helicopter. This helicopter is also called ALH Rudra. It's a twin engine configuration. It also has a dedicated electronic warfare suite. So the next topic is propylene glycol. This topic is important for your science and tech section. Drugs Controller General of India has directed drug manufacturers to stop using propylene glycol made by the Marion Biotech company, because the propylene glycol which was supplied to the cough syrups by this company led to the death of 19 children in Uzbekistan. So this is a propylene glycol is a synthetic food additive which has the same chemical group as alcohol, and it is a synthetic liquid substance which absorbs water. It is a clear, colorless, slightly syrupy at liquid and liquid at room temperature. It may exist in air in the vapor form also. It is practically odorless and tasteless. So what are the uses of it? So generally it is used for making polyester compounds. It is also being used for the by the chemical, food, and pharma industry as an antifreeze. It is used also to absorb excess water so that it can maintain moisture in certain medicines, cosmetics, or food products. It is also used as a solvent for food colors and flavors in the paint and plastic industry. So the next topic is coffee production. This topic is important for your economy section. Recent research has said that coffee production across the world is threatened by synchronous crop failures because of climate change. Climate vagaries are impacting the coffee production. It requires a hot and humid climate for its growth. It requires temperature between 15 degrees Celsius to 28 degrees Celsius and rainfall of about 150 to 250 centimeters. It requires well-drained loamy soil. Dry weather is also necessary, and it is grown on hill slopes. If we look at it in India, then in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Odisha are the states where this coffee is cultivated. And Karnataka has almost 70% of total output of coffee from India. So the next topic is Wins Awards 2023. This topic is important for your governance section. Recently, the Union Minister of Housing and Urban Affairs has announced the Women's Icon Leading Swachhata Awards for 2023. So these awards will recognize and celebrate the exemplary initiatives in urban sanitation and waste management by women-led organizations and even individual women. So these applications will be open to self-help groups, micro enterprises, NGOs, startups, and even individual women leaders and Swachhata champions. So these nominations will be evaluated at the state level. So the next topic is NASAMS. This topic is important for the security section. Norway has recently announced that it is planning to provide Ukraine with 2 NASAMS firing units in collaboration with the US. It's a medium-range ground-based air defense system, and it targets
It engages air targets at low and medium altitudes. It is being used by Norway, US, Canada, Chile, Finland, etc. And it is also being integrated into the US national capital regions, that is the Washington metropolitan regions air defense system since 2005. So it is also the world's first network short and medium range air defense system which could be integrated with any other equipment and air defense systems. So the next topic is MSME lean scheme. This topic is important for our economy section. Recently, Union Minister of MSME has launched this MSME competitive lean scheme. It is an attempt to improve quality, productivity, and performance, and even capabilities of MSMEs manufacturers, so that they can transform themselves into world-class manufacturers. So through this journey, MSMEs will be able to reduce wastage substantially and improve their productivity and quality. So under this scheme, MSMEs will be implementing lean manufacturing tools like Kaizen, FS, 5S, Kanban, etc. And they will be trained and under the competent lean consultants to attain basic, intermediate, and advanced efficiency. Government will be providing about 90% of the implementation cost for handholding and consultancy fees. Apart from that, additional contribution will be given to special MSMEs. So the next topic is Subhash Chandra Bose Apada Prabandhan Puraskar 2023. This topic is important for your security section because we cover this disaster management topics under the security section. So PM Modi has recently felicitated awardees of Subhash Chandra Bose Apada Prabandhan Puraskar at the third session of National Platform for Disaster Risk Reduction. So this award is given to individuals and organizations in India who have worked in the field of disaster management. Only Indian nationals and Indian institutions are eligible to apply for this award. Even the institutions, voluntary organizations, corporate entities who are part of this of India can are eligible to get this award. These awards are announced every year on 23rd of January. It entails a cash prize of 51 lakh rupees and a certificate in case the awardee is the institution, and in case an individual is being awarded, then rupees 5 lakh and a certificate is given to that individual. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.